Everyone, I hope you are doing well. Today, in this video session, we are going to deal with a very interesting story, A Crow in the House. A Crow in the House is a well-known story, and through this particular story, the poet would like to tell you something about a very different pet. This is a pet bird, and of course you all know it very well कि जो कौवे होते हैं वो कभी भी पेट नहीं होते या पेट बर्ड नहीं होते, यानी लोगों के घर में आपको कभी भी कौवा नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ जंगल क्रो और यू कैन से raven crow, and they are living in the forest or they are living in the bush. But here remember, we have a different kind of the crow which lives in the house of the human beings, and of course this is not the good kind of the crow, but this crow has some unique qualities. So without wasting the time, we are going to see that which kind of the unique qualities this particular crow has. So अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please to subscribe our channel for new and innovative learning of English language, and don't forget to press the bell icon. Please to subscribe. So let's see the first paragraph here. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tanga, or seized by a cat. So here one of the situation was happened, and the author of this particular extract found that one of the young crow had fallen from its nest. यानी अपने नेस्ट से वो जो यंग बर्ड है, वो यंग क्रो है, वो नीचे गिर गया है ऑन द रोड. एंड नाउ रिमेंबर, इट्स पॉसिबल दैट मे बी एनी वन ऑफ द कार और एनी वन ऑफ द टोंगा, इट मीन्स टांगा हियर, उसको क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है. एंड इवन ही हैज द और ही इज इन द डेंजर बिकॉज मे बी एनी वन ऑफ द कैट और डॉग सीज्ड दिस पर्टिकुलर बर्ड. सो व्हाट हैपन, इस बर्ड की मदद करने के लिए वहां पे कोई भी नहीं है, एंड दिस बर्ड इज इन सॉलिड कंडीशन नाउ. एंड ऑफ कोर्स नाउ व्हाट एग्जैक्टली द डिसीजन ऑथर मेड और टेकन, लेट्स सी दैट ही हैड पिक्ड इट अप. इट मीन्स व्हेन आई पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम. सो व्हाट एग्जैक्टली ही डिड. सो ऑथर ने क्या किया, उस छोटे से बर्ड को या छोटे से यंग क्रो को उसने हाथ में लिया और उसे लेके वो अपने घर चलाया. He brings that particular bird into his home, and this is a big decision he had made, because after that what exactly happened, let's see that it was in a solid condition. क्योंकि वो ऊपर से इतनी ऊंचाई पर से नीचे गिरा था, वो जो बर्ड यानी वो जो क्रो है वो ऊपर से नीचे गिरा था, तो उसकी वजह से उसे चोट आई थी. एंड इट इज नॉट इन गुड कंडीशन नाउ. एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर, दिस इज इन और दिस बर्ड इज इन सॉरी कंडीशन, बिग गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग. यानी उसकी जो चोंच थी उसमें बहुत सारा गैप क्रिएट हो गया था, और उसने अपनी जो यानी उसका जो हेड था, उसका जो सिर था, वो लटका हुआ था. इट मीन्स मानो कि वो जो बर्ड है वो अभी डेथ बेड पे है. दिस पर्टिकुलर बर्ड इज ऑन दी डेथ बेड, वो कभी भी मर सकता है. बट ऑफ कोर्स रिमेंबर, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव ड्यू टू इट्स कंडीशन. यानी उस ऑथर को लगा कि शायद ये जो बर्ड है वो मर जाएगा. नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट विथ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, nobody is expected that this bird will be survived. So now remember what happened, in what way they had created the magic or miracle, और कैसे उस बर्ड को बचाते हैं. Let's see that. But grandfather and I did our best to bring it round. It means author and his grandfather, उन दोनों ने कमाल करके दिखाया. And we fed it by pricing its beak gently open with a pencil. तो क्या करते थे, उस बर्ड की जो चोंच थी उसके बीच में वो क्या करते थे, पेंसिल डालते थे, और उसके बाद में they were pushing in a little bread and milk. So they pushed inside the little bread and milk,
and after that they removed the pencil to allow it to swallow. तो उसे खाने के लिए फिर से एक बार वो पेंसिल निकालते थे और उसके बाद में उसे वो क्या करते थे, वो खाना खिलाते थे. इट्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ द थिंग एंड these are the efforts the grandfather as well as the author had taken, and due to their efforts they got this success. So what exactly happened? Let's see. That we varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result the young crow was soon on the road to recovery. Because this is impossible task, but still remember they had done it very well, and at last with the help of the occasional doses, यानी कभी कभार वो जो ग्रैंडमदर की जो होममेड रेसिपी थी या होममेड जो एक जड़ी बूटी की जो औषधि थी, वो क्या करते थे, उस बर्ड को खिलाते थे. दैट इज ए प्लम वाइन, एंड दे हैड गिवन द प्लम वाइन टू द क्रो, एंड ड्यू टू दैट द रिजल्ट इज व्हाट, द यंग क्रो was soon on the road to recovery. जल्द ही वो जो क्रो है वो अच्छा होने लगा, and he is on the road to recovery. दिन ब दिन उसकी जो प्रकृति थी वो सुधरने लगी. And of course remember, now this bird is in good condition now. So after what exactly happened, we are going to see in the next paragraph. So here he was, so before that I think it's very important to solve the two questions from the margin side. So let's see what dangers were likely to befall the young crow. So young crow is in danger because when he had fallen down from its nest, that time remember he is falling on the road, and due to that he is being crushed by a cart or a tanga or seized by a cat. It's very possible kind of the thing कि शायद उसे कोई कैट पकड़ ली थी, या फिर किसी टांगे के नीचे आके, या फिर किसी काट के नीचे आके ये जो बर्ड है वो मर जाता. बट ऑफ कोर्स रिमेंबर, ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द ऑथर, दिस पर्टिकुलर बर्ड वाज सर्वाइव्ड. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर दैट हु वेर द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली who lived in his house. So other family members, till now we had discussed that he has the grandmother and grandfather as well, and other pet animals are also living there. So we will get their reference in the next passage. So till now we had discussed that author is there, grandmother is there, and grandfather is there. So let's say he was offered his freedom, but he did not take it, because after when he is getting well, that time remember उन्होंने उसको पिंजरे में नहीं रखा, because this is a crow. तो उन्होंने उसको पूरी आजादी दी, लेकिन इस आजादी को वो लेना नहीं चाहता था. It means this crow had taken something, he had taken the decision which is unique one. And what kind of the unique decision he had taken? Let's see. Instead he made himself at home in the house. Grandmother, Aunt Mabel, and even some of grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. I mean, this bird would like to live in the house of the author. ये जो क्रो है वो उस ऑथर के घर में रहना चाहता है. वहां पे कौन कौन है? ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर है, उसकी एक आंटी भी है, उसका नाम क्या है? ऑन्ट मैबल. एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर, ऑल द पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स आर देयर. Those animals and birds are objected by his entry or by the entry of this particular crow, क्योंकि उस क्रो को इस घर में वो रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो क्रो है इसी घर में रहना चाहता है. And of course due to his decision that there is no any one of the way to getting rid from this particular bird, यानी इससे छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता अभी उन्हें नजर नहीं आ रहा. He took over the administration of the house. So it means now he is free to go wherever he wants, but still he would like to live in the house of the author. We were not sure that he was male, but we called him Caesar. So they were not actually sure about his gender. इन्हें पता नहीं कि ये मेल बर्ड है या फिर फीमेल बर्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एक नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? Caesar. So Caesar is the name which was given by the author to the crow. Remember his name? Caesar is the name of a crow. So let's see. Before long,
Caesar was joining us at meal times, besides finding his own grubs or beetles in the garden. So now remember, this is his day-to-day routine, and he's eating on the dining table. And whenever dining time is there, that time this crow joined the family of the author. यानी खुद का खाना खुद ढूंढने की बजाय वो क्या करता है, जब भी खाने का समय होता है सो उस वक्त सीजर डाइनिंग टेबल के आके बैठता है. एंड he danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. So this is the unique style of the Caesar the crow. And of course remember, this is the unique style. और जब तक उसे वो लोग खाना नहीं देते, जब तक कि उसे एक छोटा सा बाउल जिसमें मीट हो या फिर वेजिटेबल्स हो या फिर सूप हो, जब तक उसे वो मिल नहीं पाता या मिल नहीं जाता, तब तक सीजर उस टेबल पे डांस करते रहता. ही जस्ट मेकिंग द नॉइज एंड ही जस्ट फ्लटरिंग हिज विंग्स. एंड ड्यू टू दैट रिमेंबर व्हाट हैपन, उनके घर की जो शांति है वो भंग हो जाती थी. और he was always restless, fidgeting about, investigating things. So this bird is or has the unique qualities. This bird is the nuisance. वो हमेशा restless रहता था and he is always investigating things. वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहता था. उस घर में जहाँ उसकी मर्जी जाए वो वहाँ पे चला जाता था और चीजें ढूंढने लग जाता था. And वो कौन कौन सी चीजें ढूंढता है, let's see. That he would hop across the table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shreds, or overturn a vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. So many things he did. वो क्या क्या करता है, वो कभी कभार मैच बॉक्स में जो मैचेस होती है वो सारे मैचेस बाहर निकाल देता था. एंड ऑफ कोर्स ही रिप द डेली पेपर इनटू श्रेड्स. यानी डेली पेपर जो उनके घर में आता था, न्यूज़पेपर आता था, तो उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देता था अपने चोंच से. और कभी कभार तो वो जो डॉग है उनके घर का, तो उसके पूंछ पे वो क्या करता था, चोंच मार देता था. एंड दिस पर्टिकुलर बर्ड इज टोटली अ न्यूसेंस. कभी कभी वो घर में जो वॉश होती है तो उसे भी वो क्या कर देता था, गिरा देता था. एंड ऑफ कोर्स वन डे दिस पर्टिकुलर थिंग वाज हैपेंड. एवरी डे दिस इज द डेली रूटीन ऑफ हिम. And that crow will be the ruin of us, grumbled grandmother. Because घर के सारे लोग उसकी इन हरकतों से पूरी तरह से वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे. And grandmother is grumbling now, and in grumbling tone she said that that crow will be the ruin of us. ये हमें क्या करेगा, ये हमें टोटली ruin करके ही छोड़ेगा, यानी पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ऐसा ग्रैंडमदर ने कहा. बट ऑफ कोर्स रिमेंबर पिकिंग मैरीगोल्ड ऑफ द कारपेट. सो उसने जो घर का जो वॉश है जिसमें मैरीगोल्ड या जो फ्लावर्स रखे थे वो वॉश उसने गिरा दिया था. एंड ड्यू टू दैट रिमेंबर ग्रैंडमदर वाज टोटली एंग्री ऑन द सीजर. कांट यू कीप हिम इन अ केज. क्या तुम इसे केज में नहीं रख सकते. सो हियर रिमेंबर शी इज आस्किंग द क्वेश्चन टू द ऑथर कि इसे एक अच्छी बात है कि इसे क्या कर दो, एक पिंजरे में डाल के इसे बंद करके रख दो. वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन केज. तो एक बार उन्होंने उसको केज में डालने की कोशिश की, पिंजरे में उसे डालने की कोशिश की. बट ही वॉज सो एंग्री एंड ऑब्जेक्टेड विथ सच फायर्स केविंग एंड फ्लैपिंग दैट इट वॉज बेटर फॉर अवर nerves and peace of mind to give him the run of the house. So what happened? उसने इतनी आवाज की, इतनी उसने केविंग की, काव इतनी की कि उन्हें लगा कि इससे अच्छा है कि इसे बाहर छोड़ दो. यानी एट लास्ट उन्होंने क्या किया, उसको बाहर छोड़ दिया. एंड दिस इज द फायर्स केविंग. वो इतना चिढ़ गया था, इतना एंग्री हो गया था कि उसकी वजह से उसको बाहर छोड़ना पड़ा. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. यानी बाहर के पेड़ पे जो दूसरे क्रोज बैठते थे उनमें भी जाके वो नहीं बैठता था. This crow is something different. He is not mixing up with the other crows. And जो banyan tree, वो बहुत बड़ी जो बरगद का पेड़ था, तो उस पे वो नहीं बैठता था या नहीं बैठता था, या बाकी के क्रो थे उसमें वो मिक्सअप नहीं होता था. ग्रैंडफादर सेड दिस वाज बिकॉज
He was really a jungle crow, raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. So maybe he has the feeling in his mind that I am something different from them. This is a totally jungle crow. This is a kind of raven crow, and due to that he had not joined the other crows, those who are sitting on the banyan tree. But it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. But author has the different thinking. ऑथर को ऐसा लगता था कि ये जो क्रो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ में रहने के लिए बना है, या उसका जो जन्म है इसी के लिए हुआ है, एंड ही इज टोटल राइट्स टू लिव विद द ह्यूमन बींग्स विद इक्वल टर्म्स। यानी जैसे ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ थी उसी की तरह उसे भी लगता था कि उसकी भी लाइफ हो, एंड ग्रोन यूज्ड टू लिविंग विद ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स, हैड बिकम स्नॉबिश। वो बहुत न्यूसेंस क्रिएट करता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत लोगों को सताता था, एनिमल्स को सताता था, लेकिन ऑफ कोर्स रिमेंबर ही हैज हिज ओन लाइफ। ही वुड इवन स्क्वैबल विथ हेरोल्ड एंड हॉर्नबिल। स्क्वैबल मीन्स टू फाइट। हेरोल्ड एंड हॉर्नबिल, दिस इज ए डॉग एंड अ पैरट ऑफ देयर हाउस। These are the pet animal and bird. उसके घर में जो दूसरे जो पेट थे, Hornbill and Harold. Hornbill is the name of the dog and Harold is the name of a parrot. And perching on top of Harold's cage. So Harold's cage के नीचे से वो क्या करता था, उसको चोंच मारता था. He would peck at the big bird's feet. यानी उसको पाव को क्या करता था, चोंच मार के उसे जख्मी करने की कोशिश करता था. Harold's cage, he would peck at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. यानी जो हेरोल्ड है, जो कुत्ता है, वो क्या करता था, हमेशा सीजर पे अपनी निगाहें बनाए रखता था और वो हमेशा उसे कैच करने की कोशिश करता था, बिकॉज सीजर इज ऑलवेज गिविंग द ट्रबल टू दिस पर्टिकुलर डॉग एंड ही इज टगिंग टू हिज टेल। यानी उसके जो पूंछ थी उस पे वो क्या करता था, चोंच मार देता था। सो हियर वी हैव टोटल 2 क्वेश्चंस इन द मार्जिन साइड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट carrion crows feeding on dead or decaying flesh. So already we had discussed that this Caesar is a unique kind of the crow. This is a jungle crow. This is not an ordinary crow. So this carrion crows, they are actually feeding on the dead or decaying flesh. यानी जो एनिमल्स मर जाते हैं उनके फ्लेश पे ये जो डिकेइंग फ्लेश होता है तो उन पे वो अपना गुजारा करते हैं, कैरियन क्रोज। एंड गेस हाउ सीजर लर्न टू से हेलो हेलो। टिल नाउ वी हैड नॉट गेट द रेफरेंस ऑफ दैट। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर टिल नाउ वी हैड डिस्कस्ड दैट हाउ और इन व्हाट वे he got the entry in the house of the author, and after getting the entry he is getting well with the help of the medicine, with the help of the homemade recipe or homemade medicine which was made by the grandmother and grandfather and author. They had taken the lot of efforts to survive this particular crow, and after when he became or he cured, of course remember he gave them a name, that is Caesar. And this Caesar is one of the nuisance. वो हमेशा दूसरों को सताता था, and he is all the time investigating something. जब तक कि उसे खाना नहीं मिलता था तब तक वो डाइनिंग टेबल पे नाचता रहता था, आवाज क्रिएट करता रहता था, एंड उन्होंने उसे पिंजरे में भी बंद करने की कोशिश की. They tried to cage them, but of course remember that time also they got the failure due to its fierce caving. And due to the lot of noise, for their peace of mind, they opened the door of that cage. उन्होंने उसे उस केज में से बाहर निकाला. And this Caesar would like to live like the human beings on the same or equal terms. And Harold and Hornbill, दूसरे जो पेट थे, तो उनको भी वो सताता था, उनको भी वो हमेशा ट्रबल में डाल देता था. And of course remember this particular Caesar is all the time living alone, and of course he don't want to mix up with the other crows because he is the raven crow as per the information provided by the grandfather. So this
This crow, in what way he is different, which other things he had done, we will see in the next session. So here I would like to thank you for watching my videos. Stay home, stay safe, stay tuned. Thank you everyone.